I hope my screen is visible. So what we discussed in last session, we are having some tools, testing tools. So generally we are having three types of tool: test management tool, then defect tracking tool, test management tool, defect tracking tool, defect management tools, and automation testing tool. When I talk about automation testing tool, we are having three types of automation testing tools. One is functional testing tool like Selenium, Cucumber, TestNG, Tosca, QTP. So these are the functional testing tool. Non-functional tool, we are having JMeter, WebScrap, LoadRunner. These are the non-functional tools. And one more type of new tool that is launched in the market. So that is nothing but API testing tool. Okay, so that is what we are going to understand in this topic. Okay, so basically what is mean by API? So API, which is we call it as the application programming interface. Then we discuss about this architecture. So we discuss about this architecture. So what this architecture is? So here you people as a client, you are sending a request to the server. Now server in very short, you are sending the request, your server is going to generate the response. Very simple format is there, guys. Generally what happens, you people are basically how it works. You are sending the request, the request will be validated by the server. Who will validate that? So there is one component called as business logic, which is created by the developer. So developer has already created that. So with the help of that, you people are going to validate that request. Then the request, if it is valid, then it will be transferred to the database server. Required data will be fetched and it will send to the client as a response. This is what generally happens in the case of uh, this what client server architecture. Okay, now how this communication is happening? So when I talk about web application, you are sending the request and server is going to process on that request. So there should be some relationship between these two. And what is that relationship? So that relationship is nothing but HTTP or HTTPS. Okay, so this is what we discussed in last session. ठीक है, चलो कर रहे गुड इवनिंग. हाँ हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया. Okay, sure. Now let's try to understand little bit about some more components. आज कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट ले लेते हैं और कल के सेशन में, कल आई होप सबको छुट्टी रहेगा. हाँ, सो कल के सेशन में हम इसका ये क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉलेशन और ये पार्ट कल के सेशन में हम ले लेते. एंड देन नहीं, मॉर्निंग का प्रॉब्लम है कि ये इस बैच में जो गर्ल्स है ऑलमोस्ट सारी मैरिड गर्ल्स है, उनको ऑफिस भी जाना होता है और खाना भी पकाना होता है. तुम तो, तुम्हारा खाना पकाने का तरीका अलग होता है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. आज कुछ ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे मतलब लोग बहुत कम है. तो सैटरडे संडे को मतलब सबके ऑलमोस्ट सबके साथ मेरा डिस्कशन हुआ है कि सैटरडे संडे को हम थोड़ा ज्यादा लेकर ना ये खत्म कर देते जाए. चलो ये वाले कंपोनेंट्स को अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज अ क्लाइंट? as we discussed, client is nothing but it is a machine.
Client server, database server, all are the machines, all are the computers basically, right? But how we can design a client? So basically, in very simple lines, client is a browser. Client, generally हम बोलते हैं कि client is a machine via which we are sending the request. ये एक जनरल चीज हम बोलते हैं, but एक्चुअल में client क्या होता है? Client is a browser. On that browser, you are sending the request, you are passing the request. So whenever you are passing that request, some languages must be used. देखो आपको आप लोगों को क्या करना है? आपको वो रिक्वेस्ट भेजना है. सो हाउ यू आर गोइंग टू सेंड दैट रिक्वेस्ट? सो वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए कुछ ना कुछ लैंग्वेज चाहिए ना. सो क्या लैंग्वेज होता है? सो मोस्टली 90% केसेस में यू आर हैविंग द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन से होते हैं? वी आर हैविंग HTML, DHTML, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, CSS, XML. ऐसे जो लैंग्वेजेस होते हैं वाया विच ये रिक्वेस्ट हम क्या करते हैं, मतलब हम सेंड करते वक्त तो हम वो सिर्फ URL करेंगे, उसके बैकएंड का प्रोसेस क्या होता है ये मैं बताने की कोशिश करूँ. ओके, अभी प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या होगा? प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. देखो ये जो है ना HTML, CSS, ये जो मैं बता रहा हूँ, DHTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ये दीज आर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. नाउ ओनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मे नॉट बी सफिशिएंट. वहां पर आपको कुछ और चीजें भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए. वो क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम करना है. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? यू पीपल कैन यूज जावा, C#, है ना, पाइथन, PHP, ऐसे लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो. और डेटाबेस जो जब जब हम डेटाबेस का बात करते हैं, सो इन दैट केस वी कैन यूज SQL, ओरेकल, ये साइबेज, मैंगो डीबी करके एक नया डेटाबेस आया है. सो दिस ऑल आर द डेटाबेस. ओके, सो ये जनरली हम ये जो आर्किटेक्चर की बात हम कर रहे थे, सो ये आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा ये होता है. Now again moving back to API testing, why API testing is that much popular in the industry nowadays? एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आज तक जो हमने टेस्टिंग देखा वो हमने UI टेस्टिंग किया. UI टेस्टिंग मतलब वो वाला UI टेस्टिंग नहीं कि हाउ द UI इज अट्रैक्टिव, और वो जो मैंने बोला था कि मैनुअल टेस्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ वो वाला नहीं. UI टेस्टिंग मतलब आप लोग क्या करते हो? You are going to test this, सपोज ये फेसबुक का पेज है, तो फेसबुक के पेज के ऊपर आप क्या करते हो? यू आर टेस्टिंग द फंक्शनलिटी ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स. तो ये यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स हो गया, पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लॉगिन का बटन. सो ये वाला UI, एंड आप लोग क्या कर रहे हो? यू आर टेस्टिंग दैट. नाउ इमेजिन इफ UI is not the part of testing. आप लोग जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आप लोग टेस्टिंग कैसे कर रहे हो कि ये UI का टेस्टिंग कर रहे हो. 2 मिनट के लिए ऐसे इमेजिन करके चलो कि आपके सामने कुछ UI ही नहीं है, तो क्या होगा? उसका एग्जीक्यूशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा फास्टर होगा. मेरे हर एक बैच में मैं एक कोशिश ये करता हूँ कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्राउजर मैं बता देता हूँ. हाँ, उसको उसको बोलते हैं हेडलेस ब्राउजर. पूनम एंड वैशाली, इफ यू रिमेम्बर, हमारे बैच में हमने HTML यूनिट ड्राइवर करके एक देखा था. वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू HTML यूनिट ड्राइवर. मेरे नए बैच में अभी वो HTML यूनिट ड्राइवर तो राइट नाउ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय Selenium, इट इज डिप्रिकेटेड. सो अभी क्या किया है उन्होंने? सो एक क्या बोलते हैं उसको, क्रोम ऑप्शन इज इक्वल टू न्यू क्रोम ऑप्शन करके, वहां पर आप एक ऑप्शन को प्रॉपर्टी ऐड करके हेडलेस कर सकते हो. सो वहां पर क्या होगा? हेडलेस जब आप करोगे तो जस्ट वन सेकंड. नमस्ते. नमस्ते, बोला कि हाँ.
नाही हो, सगळीच रद्दी परवा घातल्यात पप्पाने, सगळीच. मला वाटतंय एक 8-15 दिवस झाले असतील. होय. तरी पण बघतो जुनं, म्हणजे त्यात आता गट्ट्यामध्ये कुठंपर्यंत आहे जरा बघतो एकदा, पण एवढं जुन्याची शक्यता कमी आहे. तेच की बघतो, 2 महिने झाले ना, ऑलमोस्ट 2 महिने झाले. कुठली कुठली घातल्यात बघतो आणि मग सांगतो की तुम्हाला. पुढारी पाहिजे ना. हो, बघतो. ब्राउजर HTML यूनिट ड्राइवर में, ब्राउजर में, या फिर जो हम हेडलेस बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, सो वहां पर UI नहीं होता है, मतलब आपके सामने एग्जीक्यूशन दिखाई नहीं देगा। हाँ बोला कि हेलो। हेलो। सो वहां पर आपको, आपके सामने अगर UI नहीं हो तो एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि it will not waste the time in that particular processes. The same way, when I talk about API testing, वहां पर क्या होता है, सो API टेस्टिंग में आपके सामने यू आर नॉट सपोज टू टेस्ट द UI। सो अगर आपने एपीआई टेस्टिंग के बारे में कभी देखा है, सुना है, तो आपको शायद ये पता होगा कि यू आर जस्ट पासिंग द रिक्वेस्ट फॉर द पेज एंड इट विल टेक सम टाइम टू लोड दैट पेज। सो जनरली ये होगा, when you are sending the request you will get the response, but in the UI testing or functional testing the time will be consumed to load that page। ये वाला पेज जब हम whenever I'm sending the request for this page, suppose यहाँ पर मैंने एक गूगल के लिए रिक्वेस्ट दिया, सो टू प्रोसेस दिस एंटायर रिक्वेस्ट, उसका UI लोड होना, ये सारी चीजें होने में it takes some time। in API no UI interaction is there, API का कोई UI नहीं होता है। Okay, that's why the execution is faster। API testing is very faster। Why API testing is very faster? Because because there is no UI included in this, UI का कोई relationship नहीं है। So traditional testing में हम क्या करते हैं, so you people are sending the request to the server via that UI। so ऐसे यहाँ से हम request भेजेंगे ना, एड्रेस पे driver डॉट गेट करके हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, the request will be processed, request will be passed to the server via to the DB via server, database server via ओके। सो ये होगा, देन वहां पर प्रोसेस होगा एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स, राइट। ये यूआई, मतलब यूआई ट्रेडिशनल अप्रोच में ये चीजें होती है। नाउ यूआई टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग में क्या होता है, इन एपीआई टेस्टिंग इंस्टेड ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स, 3-वे कम्युनिकेशन, मतलब क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस, वी आर पासिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू द बिजनेस लॉजिक। यहाँ पर हम लोग यूआई टेस्टिंग हम क्या करने वाले हैं, वी आर डायरेक्टली सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द बिजनेस लॉजिक। सो दिस बिजनेस लॉजिक विल वर्क देयर। So here that business logic will work। so you are sending request to the business logic, directly आप क्या करोगे, business logic को request send करोगे, right? हिडान बघू काय केलंस।